Hello everyone. In the last video, we have discussed the history of company legislation in England, from where the company law was developed and the concept of company was originated. So today in this video, we will discuss the topic history of company legislation in India. So let's start. The history of company legislation in India begins from the year 1850, when the Joint Stock Companies Act 1850 was enacted. So this law was based on the English Companies Act of 1844. Like the English Companies Act of 1844, the Joint Stock Companies Act 1850 also recognized the concept of separate legal entity. It means that companies registered under the Act become a body corporate. The company gets its own identity on registration, separate from its member. But the Joint Stock Companies Act 1850 did not recognize the concept of limited liability. जो लिमिटेड लाइबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट था वो एक्ट के अंडर में रिकॉग्नाइज नहीं था. दैट मीन्स दैट द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर ऑफ द कंपनी रिमेन्स अनलिमिटेड. By the year 1857, a new law was enacted by the Indian legislature, by which the concept of limited liability was recognized and made, and the members' liability, the company's members' liability, were made limited by this act. In the year 1862, a new English Companies Act was enacted to consolidate the existing companies laws in England. Based on that act, Indian legislature also enacted a similar law, the Companies Act, in the year 1866. The Act of 1866 laid down some of the modern provision of company, such as provision relating to Memorandum of Association and Article of Association, and made these two important documents integral part for the formation of limited liability company under the Act of 1866. The Act also introduced for the first time the provision relating to winding up of a company in India. The Companies Act of 1866 continued till 1882. As we discussed earlier, a series of amendments was made to the Companies Act of 1862 to bring the Indian Company Law in conformity with the changes made in English Companies Act. A new law was enacted by the Indian legislature in the year 1882, that is the Companies Act of 1882, and this act continued till 1913, when the new Companies Act was enacted again in the year 1813. So in the year 1908, the English Companies Consolidation Act was passed. So based on such enactment, in the year 1913, a new Companies Act of 1913 was enacted in India by the Indian legislature. So this 1913 Act also continued till 1956, when the new Companies Act was enacted by the government of independent India. So the Companies Act of 1913 also amended several times in the year 1914, 15, 26, 30, 32, and extensively amended in the year 1936, because in the year 1929 English Companies Act of 1929 was enacted. So based on that law, the Indian Companies Act of 1913 was extensively amended in the year 1936. The Companies Act of 1913 was in force till 1956, when the new Companies Act 1956 was enacted by the Parliament of Independent India. तो 1947 तक इंडिया ब्रिटिश रूल में था. तो उसके पहले जितना भी लॉ हम लोग को कंपनी लेजिस्लेशन एनाक्ट किया गया है, हमने देखा है कि वो ब्रिटिश जो इंग्लिश कंपनीज लॉ था उससे इंस्पायर्ड था. तो उसके मुताबिक इसमें इंग्लिश कंपनीज लॉ जो भी चेंजेस किया गया है या फिर नया लेजिस्लेशन एनाक्ट किया गया है, उसके हिसाब से हमारे इंडिया में भी कंपनी लॉ को चेंज किया गया था. तो इससे क्या होता है कि सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन जो इंग्लैंड में है या है, वो इंडिया में जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है वो टोटली डिफरेंट है. तो हम लोग का जो लॉ फ्रेम किया जा रहा था कंपनी लॉ, वो
इंग्लैंड में जो चेंजेस हो रहा था उसके मुताबिक हमारा लॉ चेंज हो रहा था, लेकिन हम लोगों का जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है दे डिसरिगार्डेड द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंडिया। After independence, the government of India has appointed the Company Law Committee in the year 1950 under the chairmanship of H.C. Baba. So the committee was appointed to inquire into the existing company laws and make recommendations and suggestions to the government for necessary changes in the existing company laws. इंडिपेंडेंस के पहले जो भी लॉ एनेक्ट किया गया था या फिर फ्रेम किया गया था कंपनी लेजिस्लेशन इंडिया में, तो वो कहाँ से आया? इंग्लिश कंपनी लॉ जो है उसको फॉलो कर रहा था। तो इससे क्या हुआ कि इंडियन जो कंपनीज, इंडियन जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है, इंडियन सिचुएशन जो है उसको डिसरिगार्ड किया गया था। तो इसके बाद क्या हुआ, इस कमेटी को इसलिए मतलब अपॉइंट किया गया था ताकि जो एग्जिस्टिंग लॉ है उस पर एक स्टडी करे और गवर्नमेंट को सजेस्ट करे, कुछ रिकमेंडेशंस दे फॉर चेंजेस इन द लॉ व्हिच इज़ मोर सुटेबल फॉर द इंडियन कंडीशन, इंडियन इकोनॉमिक सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस। The committee submitted its report in March 1952, and on the recommendation of the committee, a bill was introduced in the parliament and was passed as the Companies Act 1956. And the Companies Act 1956 came into force on 1st April of 1956. So the main object of the act was to provide protection to the investors, creditors and public at large. हाँ, और एट द सेम टाइम मतलब मैनेजमेंट जो कंपनीज इन्वेस्टर्स को, क्रेडिटर्स और पब्लिक को प्रोटेक्ट तो करना था, और एट द सेम टाइम जो मैनेजमेंट को कुछ फ्रीडम दिया जाए जिससे मतलब मैनेजमेंट कंपनी का जो रिसोर्स है उसको बेस्ट पॉसिबल मैनर से उसको यूटिलाइज कर सके और अपना प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज कर सके। द कंपनीज एक्ट 1956 इज़ ऑल्सो नॉट फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स। हाँ, 3 साल वर्किंग के बाद अब देखा गया है कि बहुत सारे लूप होल्स, बहुत सारे डिफेक्ट्स है जो कंपनी एक्ट में, प्रिंसिपल एक्ट में, जो कि 1960, जिसके कारण 1960 में फर्स्ट अमेंडमेंट किया गया, द कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 1960। तो इसमें आप देखेंगे कि 1960 में जो अमेंडमेंट किया गया है उसमें द अमेंडमेंट एक्ट का ही 218 सेक्शंस था। तो आप सोच सकते हैं कि किस एक्सटेंट तक इस एक्ट को, प्रिंसिपल एक्ट को अमेंड किया गया था। तो ऐसे बहुत सारे बाई दिस अमेंडमेंट, फर्स्ट अमेंडमेंट, बहुत सारे प्रोविजन, नया प्रोविजंस ऐड किया गया था, बहुत सारे एग्जिस्टिंग जो प्रोविजंस था उसको भी चेंज किया गया था। तो इस एक्ट को टाइम टू टाइम कई बार उसको अमेंड किया गया है टिल 2006। उसके सीरीज ऑफ अमेंडमेंट्स वर मेड and the last amendment was made in the year 2006. So even after a series of amendment to the Principal Act, it was realized that many of the provisions of the Principal Act had become redundant or outdated, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस अभी भी है जो मतलब इतना सारा अमेंडमेंट किया गया है कंपनीज एक्ट में, फिर भी अभी भी बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस है जो कि आजकल के ज़माने के लिए वो रिलेवेंट नहीं था। तो अब देखिए कमर्शियल लॉ बहुत जल्दी उसको चेंजेस, अमेंडमेंट लाया जाता है, क्योंकि जो कॉरपोरेट जो सेक्टर है इसमें बहुत जल्दी इसमें चेंजेस आता रहता है, जिसके लिए उसके साथ लॉ को भी चेंज किया जाता है। तो विद दिस ऑब्जेक्ट द कंपनीज अमेंडमेंट बिल 2009 वाज इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट। सो उसको चेंज करने के लिए उसी को मद्देनज़र रखते हुए ये बिल को पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया गया था। इन द मीन टाइम आप देखिए कि सत्यम बहुत सारे कॉरपोरेट स्कैंडल जो है वो सामने आने लगे थे 2008-9 में। तो इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि सत्यम कंप्यूटर सर्विस स्कैंडल 2009। तो सत्यम कंप्यूटर स्कैंडल जो हुआ था उसमें भी हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे जो कंपनीज का जो की मैनेजरल पर्सनल्स है वो लोग कैसे इन्फॉर्मेशन को हाइड कर रहे थे, अकाउंट बुक्स में कुछ हेराफेरी भी किए थे। तो जिसके लिए क्या हुआ, जब वो सामने आया तो पूरा जो एक टाइम पे आया जब मतलब 2009 में ये क्या हुआ, कंपनी कोलैप्स हो गया। तो इससे क्या होता है कि कंपनी जब डूब जाता है तो इसमें सबसे ज़्यादा लॉस किसका होता है? इन्वेस्टर्स का तो लॉस होता है। फिर जाके क्या होता है कि लोगों का विश्वास उठ जाता है ना कॉरपोरेट सेक्टर से, जिससे लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। तो अल्टीमेटली जो इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, फिर आप देखिए फॉरेन जो इन्वेस्टर्स है वो लोग भी इन्वेस्ट करना छोड़ देंगे। तो इससे क्या होता है कि अल्टीमेटली जो हमारे इकोनॉमी में ही इसका इफेक्ट देखने को मिलता है।
तो इतना बड़ा बड़ा जब स्कैंडल सामने आने लगे, जो सत्यम कंप्यूटर एज वन ऑफ द एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल, तो इससे पता चलता है कि हमारा लॉ जो है वो इफ़ेक्टिव नहीं था। तो कंपनीज अमेंडमेंट बिल 2009 इंट्रोड्यूस करने के बाद लेकिन किया गया था, लेकिन ये बिल जो है वो पास नहीं हुआ। तो द कंपनीज अमेंडमेंट बिल 2009 पार्लियामेंट में पास नहीं हुआ, लेकिन इस बिल को पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में इसको रेफ़र कर दिया गया। So the 2009 bill was referred to the Standing Committee, Parliamentary Standing Committee, and after receiving the various recommendations and suggestions from various stakeholders, from corporate sectors, from civil societies, experts, central government agencies, so the government ने क्या किया, जो 2009 बिल जो था उसको विड्रॉ कर दिया और इसके बदले में एक नया फ्रेश कंपनीज बिल 2011 को द कंपनीज बिल 2011 इसको इंट्रोड्यूस किया पार्लियामेंट में। So the company's bill 2011 passed by Lok Sabha on December 18, 2012 and passed in Rajya Sabha on August 8, 2013. Finally, it received the assent of the President on 29th August 2013 and became an act called as the Companies Act 2013. The Companies Act 2013 which came into force on 30th August 2013. Now the Companies Act 2013 is the present law govern the subject in India. So this is the brief history. I hope it is useful for you to know the historical background of company legislation in India. Thank you.